Now we are moving forward to the 10th module, that is leading by Shalini ma'am and Priyanka Mishra ma'am and her team. It is based on violence, safety and security measures. Please give them a huge round of applause. अरे 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 रुको 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 लड़ो मत Okay, so as you saw, violence is the last refuge of the incompetent. Beloved greetings to our respected principal, Mrs. Vandana Tandon ma'am, our academic director, Mrs. Pramila Mishra ma'am, and Mrs. Shakshi Tandon ma'am, all our coordinators and our respected teachers. I, Shrishti Mishra, from class 10th with my fellow mate, Ishani Das, class 9th, are going to make you aware about the safety and security tips one can adopt in order to avoid this grave problem that is violence. Hey Ishani, what happened to you? Mom, you know what happened yesterday in my class? What? Hey Shani, see this new project I made. Oh, it's really nice. I like it. Yeah. Oh, I'm just sorry. Did you just ruin my pant? Oh my god. I'm sorry, Srishti. I'll clean You it up. dropped water on my pant intentionally, didn't you? No, it just happened No. accidentally. Wait, save your justification. I don't want to hear it. But Please. You know what? Let me tell everyone to bully you now. You will regret this. Srishti, Well, the scene that you just witnessed right now is called as bullying. Yes. So what was it? What was it? Audience, please. What was it? Bullying. Yes, very correct. Clap for yourselves. And bullying is a very common form of violence. Right? Now, violence refers to violence is any act that can cause harm to someone, irrespective of the person's caste, class, creed, race, age. gender, etc. Now, we are going to present a short and small video that is depicting bullying so you can understand it better. Now, enough about violence. Ishani, do you know what are the other forms of violence? Yes, Srishti, I do. But let us ask our audience first. The other forms of violence, please. Anyone? Bandana ma'am. Physical violence, emotional violence, Anju ma'am. violence, Suman punishment. ma'am. Thank you so much. Clap for them. Amazing guesses. Yes, so there are many types of violence: physical violence, emotional violence, sexual harassment, corporal punishments, and bullying. Right. Now, do you remember the first role play that we did in the beginning? Well, it also depicted a very common form of violence that ma'am just stated. And that is not bullying, it is one another form. So, anyone? What is the other form apart from bullying? The first role play. Apart from bullying, what was the other form that can suit that type of role play? The physical, yes, and even emotional. Emotional, yes. Thank you.
See, basically, let me clear it. Because in the first role play that we saw, वो जो गर्ल थी जो बुली हुई थी, बिकॉज उसने इंटेंशनली नहीं किया था, तो शी डिडंट डिजर्व टू बी बुलीड ऑफ कोर्स, एंड अगर गलती से किया भी होता तो शी डिडंट डिजर्व इट एज वेल, राइट? बिकॉज द बुली जिसने उसे बुली किया था उसने सारे स्कूल को मस्ट हैव शी टोल्ड हर कि उस विक्टिम को बुली किया जाए, एंड बिकॉज दैट इज द रीजन दैट मस्ट हैव लेड हर to fight psychological trauma and severe depression. Right? Now another skit we are going to present to you, and later we are going to ask what is it. Good morning, ma'am. आप अपना काम दिखाइए प्लीज। क्या है? खड़ी क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, ma'am. And why were you absent yesterday? मैम बीमार थी. ओह, बीमार थी। सेम बहाने। डेली का यही काम है। मार्क्स देखे तुमने अपने? Yes, ma'am. कितने? 9 आउट ऑफ 30. वाओ, क्लैप करिए भाई इसके लिए। 9 आउट ऑफ 30 हाईएस्ट मार्क्स लेकर आई है ये तो मैडम। रुको, मैं अभी आपकी मदर को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो मैम, Yes, मैं श्रुति की ना मैथ्स टीचर बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, बताइए क्यों फ़ोन किया आपने? मैम आपने उसके मार्क्स देखे? नहीं मैम, कौन से सब्जेक्ट के मैम? मैथ्स। मैथ्स कितने आए मैम? पता है क्या मैम, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। 9 मार्क्स लेकर आई है आउट ऑफ 30। आउट ऑफ 39? Yes, कोई बात ma'am. नहीं मैम, आप उसको घर आने दीजिए, घर हाँ, आने दीजिए। एक थोड़ा बार। सा देख जी लीजिए। जी हाँ? ज़रूर देखूंगी Okay. आज अच्छे से मैम। मैं आ गई. घर आ गई, आपका इंतज़ार था। कहाँ से आई हैं आप? स्कूल से. स्कूल से। तो मुझे पता लगा कि आज आपको कुछ मार्क्स वगैरह मिले हैं। मम्मा सॉरी. व्हाट सॉरी? सॉरी किस बात की? मार्क्स कितने आए आपके? मम्मा 9 आउट ऑफ 30. इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुझे। इतने पैसे इसीलिए खर्च कर रही हूँ। चल भाग यहाँ से, भाग, निकल मेरे घर से। Well, we have another skit that will make you laughing or maybe even crying. चाचा जी, ये देखो. बेटा, ये देखो, मेरे को मैथ्स का सम बिल्कुल नहीं आ रहा, प्लीज करवा दो. अरे इतनी टेंशन मत लो, आओ इधर आओ। ये तो हो जाएगा, शाम को पढ़ा दूंगा। अभी मूवी देखने चले हम? नहीं. बेटा इतना आराम से आओ, छोटी इधर करो, चलो। चाचा जी ऐसे मुझे टच मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. So, as you saw those 2 role plays, we would like to again ask our audience, and that is very simple, कि second and third form में कौन-कौन से हमने forms दिखाए. सेकेंड रोल प्ले फर्स्ट। यस स्वपन सर। I think second was physical punishment, and the last one was physical assault. क्लैप फॉर सर। यस यस पुष्पिता मैम। द थर्ड वन? The third one was sexual harassment. नितिन सर सेकेंड वन? फिजिकल बेसिकली कॉर्पोरल पनिशमेंट वो होता है जब स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करने के लिए फिजिकल मीन्स का यूज होता है, फिजिकल वायलेंस का यूज होता है, दैट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट. तो अब हमने 2 स्किट्स तो देख लिए, लेकिन जब भी हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन में टू बी सेफ एंड सिक्योर फॉर आवरसेल्व्स वी नीड टू बी अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल इनफ to differentiate between a good touch and a bad touch. So basically a good touch is like a blessing to us, which will make us feel good, confident, comfortable and easy. Whereas A bad touch is like a curse which makes us stiff, uncomfortable and awkward. Now we would like to tell you how do we feel when we are violated or when we are bullied. तो basically आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक boy है, एक girl है, तो I'll tell about the boy. So basically the bullies call him names in a very bad way. They exclude him from the society that they make and they feel isolated. They bully him, they tease him and they damage their assets. And after all that, the boy feels scared, ashamed, worthless and etc.
एंड सेम गर्ल्स के साथ भी होता है, बिकॉज दोनों जेंडर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, तो फीलिंग्स में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो जब किसी भी लड़की के कई बार हमें फिजिकली असॉल्ट करने में हेयर पुलिंग की जाती है, गॉसिप की जाती है, हैरेसमेंट होती है, ऐसे सिचुएशन में गर्ल्स को मोस्टली डर जाते हैं, वो लोग स्ट्रेस फील करते हैं, हर्ट होते हैं अंदर से। कई बार लोग जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बजाय उन फीलिंग्स को अपने अंदर दबाते जाते हैं, विच एक्चुअली एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें फ्रस्ट्रेशन के तौर पर वो बाहर आता है, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग आउटबर्स्ट फॉर देम। अच्छा, नाउ दिस इज अ सिचुएशनरी क्वेश्चन, तो सबका आंसर अलग हो सकता है, बट इमेजिन यू आर स्टक इन अ सिचुएशन वेयर समवन इज हरासिंग यू, देन व्हाट सॉल्यूशंस विल यू टेक और व्हाट प्रिवेंटिव्स विल यू टेक? When someone is harassing you, what would be your call? Neva ma'am. We should talk to our elders, as well as we can discuss with our peer group also. Clap for ma'am. Yes, Tanvi ma'am. Ma'am, we can discuss with the one whom we trust. Any other answer from you? Any other way? Any other solution? मैम there Okay. समटाइम मे बी आप डिस्कस करने के लिए आपके पास टाइम ना हो या अवेलेबल ना हो आपके आसपास कोई, तो यू कैन से लाउडली नो, सो डैट जो भी आपके सराउंडिंग पीपल होंगे वो आपकी हेल्प कर पाए। Well done. Clap for ma'am. थैंक यू मैम, क्योंकि आई एम टेलिंग यू वन एनजीटी रूल, देयर इज अ गुड एनजीटी रूल टू स्टॉप दिस। फर्स्ट वन इज एन मीन्स No. no, just as ma'am says, and G means go, or T means what ma'am says? Tell. Tell. तो बेसिकली वी कैन शो दिस इनटू प्रैक्टिकलिटी। एक एग्जांपल देख लीजिए। में क्या हुआ था? अरे कुछ ताली शाली हमारे साथ भी हो जाए। नो। Stop following us. Go. Ishani, let's tell someone elder. मैं कॉल करती हूँ। हेलो Hello. आंटी, आप प्लीज यहाँ पे पार्क में आ जाइए। क्या हुआ है? समवन इज फॉलोइंग अस, वी नीड यू। अभी आ रही, don't worry. Okay, we can take. मैम वी कैन शाउट लाउडली, प्लस आजकल तो जगह जगह पे वर्कशॉप्स होती हैं, हमें खुद के अंदर सेल्फ डिफेंस की कुछ ट्रिक्स तो नॉर्मली पता हाँ। होती है, एंड वी कैन आल्सो अटेंड कराटे क्लासेस। हाँ, basically हमें ऐसी सिचुएशन जूडो इज अ मस्ट फॉर मोस्टली गर्ल्स, बॉयज के लिए भी अगर वीक हो तो। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, और अरे नहीं, रुक जा। Okay, now see, there are other solutions too. Basically, to be mature and take responsibility for your action, because you should not be the cause of someone's bullying, someone's rape, because आपको तो रिग्रेट होगा ही, एंड साथ में आप ये भी सोचते रहोगे पूरी जिंदगी अपने कि you ruined someone's life, right? And now we should also be aware of how violence can exist in reality, right? तो हमें बस स्लोगन्स ऐसे देखने, सुनने या बनाने नहीं है। We should also imply that in our lives, because only after that we make a great community for many people. And one stereotype I would like to break, कि not only girls are harassed, raped, boys can be too violated, boys can be too harassed. तो ये बहुत सारे लोगों के मन में ये बहुत old mindset होता है, तो I want to change that. Now, Okay, so now here on the screen we have some pictures for you where you have to identify which form of violence is this, and basically you have to describe the whole scenario in your own words. Picture 1. Who is going to define picture 1? Meenakshi ma'am. The first picture is showing the bullying, and then the other, those who are standing there, they are also emotionally also torturing that child. Yes.
Picture 2, Sakshi ma'am will tell. It's also sort of bullying, making fun of other student. Amita ma'am will say about picture 3. In picture 3, I can see some books and things lying down. So I think it's a form of violence. And he's crying also. So he has been hit badly and all these things are lying down. So it's a kind of a physical violence. Clap for ma'am. Clap for Okay. So now we have some interaction time where we'll be asking you some questions. Questions and they are situationary questions जो आप अपने accordingly answer कर सकते हो. First I will ask. So according to you, what are the possible causes that leads to the rise of sexual assault cases right now? Like बहुत सारे cases हो रहे हैं. तो आपके according ऐसे कौन सी reasons है? Reasons for such harassments. Yes, Anita ma'am. Internet. Internet. A very good answer. Clap for ma'am. Yes, Cyberbullying is a very common method right now to bully and create violence. Remaining silent at such situations. Very good. Clap for ma'am. Yes. Second question. So as we all know कि आजकल रेप केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसमें आप किसे ब्लेम करोगे? Like you will blame the rapist or the victim? Swati ma'am, rapist or victim? Who we should blame? If the victim provokes. Yes, very good answer. Clap for ma'am. Third question. Okay, so like I would like to mention this कि हर बार हम completely किसी भी rapist को या किसी third person को blame नहीं कर सकते for such incident. In such cases, we need to be aware and responsible for ourselves also. हमारे अंदर एक खुद की sense of responsibility and security हमारे लिए भी होनी चाहिए. We should also not be careless. And third question, most of जो sexual harassment cases होते हैं उसमें juveniles involved होते हैं. अच्छा, do you know the meaning of juvenile? Yeah. So juveniles involved होते हैं. So don't you think कि अगर कोई इंसान जो कि already adult भी नहीं है and still the person is like assaulting a person, तो उसे भी same punishment मिलनी चाहिए as the adult one is getting. Like what's your opinion on that? Yes, they are saying yes. Okay. Very good. Fourth question, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है इसके बारे में, but I want answers. So if you're a student or मतलब obviously you're a teacher, but if you're a student and you're working in a school corridor and you see some seniors bullying a junior of your age, like the junior is your friend and the seniors are bullying him, like they are physical violating him, so what will you do? Like will you just ignore the scenario and be the same cause, or will you risk yourself but help the junior? Help the juniors. Reason. Like will you risk yourself? Kiran ma'am will tell the reason. Satisfaction. Ma'am is saying for self-satisfaction. जो आपने बोला कि कहीं ना कहीं हमारा भी consciousness होता है जो हमें बताता है कि what we are doing wrong or right. Yes, clap for ma'am. Very good. Okay, thank you so much. Now we would like to give the mic to Priyanka ma'am to conclude the session. Thank you so much everyone. Precaution is better than cure. So in present scenario, our children are the most vulnerable citizens in our society, and that's why they deserve a life free of violence and fear. With these words, I rest my case. Thank you everyone for giving your precious time. And बच्चों ने मेहनत की, तालियां तो बनती है. Thank you.